So hello, good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. Good evening. Yes, sir. Yes, sir. Good evening. Okay, fine. So today we are going to look at three different concepts. That is one linear regression, then logistic regression, and finally will be a polynomial regression. We'll quickly see what is regression and all those things. Just tell me if my screen is visible or not. सर इसके पहले अगर मैं एक बार अटेंडेंस ले लूँ तो हो पाएगा हाँ क्या? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. कुंता भार्गव साई. वो उसमें वो नहीं हो रहा है क्या मैम, वो वाला जैसे जो आपने कहा था कि ऑलरेडी उसमें ना शेयर हो जाता है करके अटेंडेंस. एक्चुअली सर शेयर हो जाता है, उसका एक्सेल शीट भी पूरा गूगल ड्राइव पर आ रहा है. बट देन रिया मैम ने बोला है कि उन्होंने जो एक्सेल शीट अटेंडेंस की दी है उसको भी फिल करो. ठीक ठीक ले लीजिए. इसलिए कुंता भार्गव साई. Present, ma'am. वी अनिकेत. हितांशु सोनी. अनिकेत महेश्वरम. Present. मंजा कुप्पम वामशी कृष्णा. Present, ma'am. एस त्रिनाथ. Yes, ma'am. शेख सलमान सरोश. Yes, ma'am. Are you there? Yes, ma'am. मणिकांता कोटा. Yes, ma'am. अभी मानवर्ष. हसन हसन बादा भरत चंद्र. गंजी अनुदीप. Yes, ma'am. एन विनय. Yes, ma'am. तुहीन रॉय. Present, ma'am. हेमंत रेड्डी जी. Yes, ma'am. धारणे नंदिनी. Yes, ma'am. धारणे नंदिता. जिन्ना जिन्ना यू. क्षितिज मिश्रा. पायल संजय. Yes, ma'am. कोपार्थी साय विघ्नेश. बीबी प्रद्युमन. अंतेल नागेश्वरी. हस्मिता दसारी. Yes, ma'am. रावी. आकांक्षा चौहान. गट्टू श्री Present, ma'am. हर्षिता. Present. Akansha Present, ma'am. कोलाकी अंजलि पटनायक. आयुषी कानोजिया. अंशुल कानोजिया. Present, ma'am. Ma'am, Ayushi Kaneja is also present. I think Present, ma'am. mic is not working. ओके. टेला मनासा. कोथू गुना शेखर. Present, ma'am. आदित्य रेड्डी. अमित कुराडा. Yeah, present, ma'am. साई अलापति. प्रज्ञा श्री गौर. सदानंद अनुराग कुमार. Present, ma'am. एम विष्णु रेड्डी. एन गायत्री. जुलूरी वामशी. Present, ma'am. अंकित सिंह.
अनुगंती ऐश्वर्या. Present, ma'am. Tulipik Konika Preeti. Present, ma'am. Natam Lahari. Present, ma'am. Prince Singh Dogra. Present, ma'am. Okay, so I'm done with the attendance. Yeah, if anyone's name is not there, so you can write down their names in the chat box Yeah. quickly within a minute. Something like Vikita, Ravi, V, Aniket. Aniket, actually your name has taken, and Ravi, Vikita, ma'am has also taken your name. Nandita, same. Okay, fine. So yeah, yeah, okay, fine, not an issue. Okay, shall we start now? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So so we are going to start with this regression, that is a part of supervised learning, regression and classification. So today we are going to see some of the points regarding regression. Okay, so I'm sorry for that interruption. Okay, fine. So first of all, what actually regression is? So regression is something to show the relationship between to show a relation between a dependent and an independent variable. So what are dependent and independent variables? So we'll go with an example. Like if you have given a small task to find an annual sale of any particular company. Fine, you have given a task, that's something you have to find an annual sale of a particular company. So what does this annual sale is? So this annual sale is your outcome, and your outcome is actually your dependent variable, that is basically your target variable. And what are the independent variables? Fine, so it's something like if you want to find out the annual sale, so you have to see some of the factors. So those factors are called, that is those are the parameter variables, are called as your independent variables. Fine, like if you want to find out the annual sale of any company, you have to go through some of the factors like salary, person's age, person's experience, and all those things. So these things are called as your independent variables. Fine, so so these 3 points are like regression, that always shows a relation between a dependent and an independent variable. Dependent are those variables that will be your output, like for an example that we've seen, like if you want to find out an annual sale of a particular company, so your annual sale is going to be your dependent variable, while the factors that are going to affect your dependent variable, that is your annual sale, will be your independent variables, like their salaries, particular age, particular experiences, and all. Fine. Then after outlines, it's actually an observation which contains whether it's a very low value or very high value in comparison to some observed values. Now, what is underfitting and overfitting are? So, like if some algorithms are going to work well with the training data set, but not well with the testing data set, then we can call it as an overfitting. And in the same way, like if some algorithms even doesn't perform well in any training set, doesn't work in any training data set, then they are called as underfitting. These two terms, like these three terms, outliners, underfitting, and overfitting, we'll again discuss later on. So first, just to have these 3 points, that what are regression, what is dependent, and what is independent variable. Fine. So these are some of the basic regression models, like linear logistic regression is basically an example of classification that we'll see later on. Then we have polynomial regression, support vector machines, regression tree, random forest, and all those things. Okay, so now let's see what is linear regression. Linear regression is all about. As we've seen that regression shows the relation between a dependent and independent. What linear regression shows? It just shows in a linear formation. Like it's a linear formation, we can say as y equal to mx plus c. While your x-axis will be your independent variables and your y-axis will be your dependent variables. We'll see an example too as well.
now again, like linear regression, okay, fine, it's showing a relation in the form of linear model. So still it has two different models. One is simple linear and one is multiple linear. When we are going to talk with only one dependent and one independent, then we are going to say simple linear. Like for example, if you find out the percentage of any student, so percentage will be your dependent, and what are the factors that are going to affect any percentage will be only marks. Yes, they have some different bugs. Just for an example, I am taking like only the marks will be an only independent variable. In the same way for multiple linear, when you have one dependent and more than one independent, like in an example in the previous we have seen of an annual sale, there are many factors like salary, then age, experience, and all those things. Fine, that is what actually linear regression means all about. Now we'll see an example. Like, is this the paint is visible to you? Yes, sir. Visible, sir. Okay, fine. So this is actually a graph. This is a y-axis and this is the x-axis. Fine. Now we have some data points. We are simply taking a data points. Like these are some data points here. Fine. So these are the data points here. Fine. So what does these actual data points are? So these, by this we can see that all these data points are continuous and in a form of linear formation. Like as the x-axis moves, as the your dependent variable moves, in the same way your independent will also move. So for this type of examples, we can directly have a linear model, that is a simple linear model. We can directly form this type of line. Fine. Now we'll see what does actually. Okay, fine. I'll just take a text here. Sir, will you share this PPT presentation in our classroom? हाँ सी वो है ना, मैं शेयर कर दूंगा, बट एक्चुअली में मेरी वो दिक्कत क्या हो रही है ना कि मेरा अभी भी क्लासरूम चल नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने डेटा प्री प्रोसेसिंग वाला भी कुछ डाला नहीं है मैंने। तो पता नहीं, या तो वो मेल में इश्यूज है या मतलब कि क्लासरूम में इश्यूज है। मैंने रिपोर्ट की हुई है, वो मुझे अगले 3 से 36 आवर्स के अंदर मुझे रिप्लाई आएगा करके बोला था, बट अभी तक आया नहीं है। एलसी जैसे ही मेरा जैसे ठीक हो जाएगा ना, तो मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा। Okay, sure. हाँ हाँ। So now, like simple, like linear equation is something like y equal to mx plus c. Fine, mx plus c. Now, what does actually simple linear equation can be written in form of this? So we have like a0, then plus a1 of x1. So what is this a0 and a1? Just simply like this, a0 and a1 will be your. सर वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है? नहीं सर। Okay, so this a0 and a1 will be your coefficients, and what these coefficients are, these are the coefficients of the regression model. This is for a simple linear regression. Now what is this y will be your dependent variable, x1 will be your independent variable. Fine. Simple linear regression, it's something like we have already seen that we have only dealing with one independent and one dependent. In the same way, like if you have something like y equal to a0, then plus a1 x1 plus a2 x2, in similar fashion it moves on. That means we have only one dependent variable, but we have some different, like independent variables are more than one, x1 x2, and further on it moves like a of m to x of m. Fine. So this is an equation of multiple linear regression, and this is an equation of simple linear equation. Now what is this a0 and a1 means? Simply a0 and a1 means just they are the coefficients which show how this independent variable is going to affect in your how is it is going to affect with your dependent variable. Like for an example, like just go through this example. Okay, like I'm writing just a simple example here. Y equal to 2 plus 3 of x1 plus 2 of x2 2 of x2 plus 4 of x3 plus 7 of x4. Fine. Just relate these two things. Fine. Now we have a0 s2. I have what I have written. I have written all the independent variables as it is, as x1 x2 x3 and x4.
dependent variable as y as it is. Now what is this 2 3 Sir, can you 2? please increase the font size, sir? Yeah, Should be better. No, fine. sir. Yes, sir. Yes. Simply just go through with these 2 points, like a0 is 2, a1 is 3, a2 is 2. So what I have done, just I have simply changed, have put some different coefficient values. So now what these coefficient values actually does, it just tells that which independent variable is going to affect this dependent variable, which independent variable is more important to get a dependent variable with more accuracy. Like if you are going with x1 independent variable, it has a coefficient of 3. With x3 it has coefficient of 4, and x4 has coefficient of 7. So we can see that x4, the x4 independent variable is having a more coefficient. So this is going to be one of the most and major important factor to find out the dependent variable. It's not like these are not important, but this is more important as compared to others. So simply what these a0, a1, a2, a3 coefficients does, it just tells that which independent variable it is associated with and which will have the most impact on the dependent variable. So simply from this example, we can see that x4 independent variable has more coefficient value. So it is going to be one of the key important factor for finding this dependent variable. Fine. That's the basic idea regarding this coefficients values a0 and a1. सिंपली मैं I'll try to just again explain in हिंदी. सिंपली जैसे जब भी रेग्रेशन का मतलब होता है, जब आपको किसी एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच का रिलेशन फाइंड करना हो, तब हम रेग्रेशन मॉडल का यूज करते हैं. ठीक. अब रेग्रेशन में दो चीजें आती है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता क्या है, जैसे आपको कोई किसी ने आपको काम दिया है, टास्क दिया है कि सिंपली आपको किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का आपको एनुअल सेल फाइंड करना है कि उस कंपनी का भाई एनुअल सेल कितना है. तो एनुअल सेल को जो आपको फाइंड करना है वो आपका एक्चुअल बनेगा डिपेंडेंट वेरिएबल. तो हमारे इस एग्जांपल में जो था डिपेंडेंट वेरिएबल बना हमारा एनुअल सेल. अब डिपेंडेंट वेरिएबल तो बन गया, अब डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड करने के लिए कुछ फैक्टर्स तो चाहिए. तो जो फैक्टर्स होते हैं ना, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ठीक. अब उसके बाद आता है लीनियर रिग्रेशन. अब लीनियर रिग्रेशन का मतलब होता है सिंपली लीनियर मॉडल में वो रिलेशन शो करते हैं लीनियर फॉर्म में, जो इसे हम कहते हैं y इक्वल टू mx प्लस c. अब उसमें अगेन दो चीजें आती है, एक होती है सिंपल लीनियर और एक होती है मल्टीपल लीनियर. अब सिंपल लीनियर का मतलब होता है जब आपके पास एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट हो, और मल्टीपल का काम होता है जब आपके पास एक डिपेंडेंट और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो. ठीक. तो यहाँ पर जैसे अब x1 था तो एक ही इंडिपेंडेंट आया और एक ही डिपेंडेंट भी आया. अब सेकंड आता है आपका मल्टीपल. तब क्या हो जाएंगे, सिर्फ आपके x2s बढ़ते जाएंगे, जितने जितने इंडिपेंडेंट्स होंगे उतने आते रहेंगे, a ऑफ m x ऑफ m. ये a0 a1 अब क्या होता है, अब a0 a1 क्या होते हैं, वो होते हैं कोएफिशिएंट वैल्यूज. अब इसका यूज क्या होता है, ये कोएफिशिएंट्स इसीलिए यूज किए जाते हैं ताकि हम फाइंड आउट कर सके कि कौन सा पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल की एक्यूरेसी बढ़ा सके, सबसे अच्छा कौन सा होगा. अब सिंपल है कि इस इक्वेशन में जो है, अब चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, x1 x2 x3 और x4. x1 की वैल्यू है 3, x2 की 2, x3 की 4 और x4 की 7. अगर अब मैं x1 लेता हूं तो मेरी डिपेंडेंट वेरिएबल की ज्यादा एक्यूरेसी आएगी कि x4 लूंगा तो ज्यादा एक्यूरेसी आएगी. सिंपल है, जिसका सबसे ज्यादा कोएफिशिएंट होगा, सिंपल है कि उसकी अगर वो यूज करेंगे तो उसका सबसे बेस्ट एक्यूरेसी आएगा. तो इस केस में हमारी x4 की इंडिपेंडेंट के वेरिएबल की जो वैल्यू है वो है 7 कोएफिशिएंट. तो सिंपल है कि अगर ये हम यूज करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी अच्छी आएगी. इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे यूज नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, बट इससे एक्यूरेसी जो आएगी ना वो आएगी थोड़ी कम. ठीक. एनी डाउट इन दिस लीनियर सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड दिस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एग्जांपल्स. जैसे एग्जांपल सिंपल लीनियर रिग्रेशन का जो एग्जांपल होता है, जैसे आपको इफ यू वांट टू फाइंड अ रिजल्ट, ठीक है, आपको रिजल्ट फाइंड करना है, किसी का परसेंटेज फाइंड करना है, तो परसेंटेज के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, सिर्फ रिजल्ट.
तो आप सिर्फ रिजल्ट से भी काम कर सकते हो, तो वहां पर हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे तो हो जाएगा। बट सिमिलरली अगर आपको किसी का सेल फाइंड करना हो, एनुअल सेल फाइंड करना हो, तो उसके कुछ अलग अलग फैक्टर्स आएंगे, जैसे हो गया आपका इनकम आपकी हो गई, जैसे सैलरी हो गई, एज हो गई, फिर आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बनते जाएंगे। ठीक, एनी डाउट इन दिस थिंग? No. Increase the font size, please. Okay, now anyone has doubt? Anyone? Should I repeat again? No doubts, sir. Spile, ma'am. No doubts. Okay. So this is okay, fine. So this is the actual work of linear regression. ठीक, सिंपल लीनियर रिलेशन बताता है। अगर मल्टीपल हो गए तो 2 लाइन आएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक, now second things comes, that is logistic regression. So what does actually logistic regression does all? सर Yeah? यदि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हुआ तो उसमें हाँ। जैसे ये सिंगल है तो इसमें 1 लाइन है, और ये मल्टीपल मान लो हाँ, 3 तो उसमें 2 इंडिपेंडेंट आएंगी। 3 हुई तो 3 लाइन। हाँ, ओके सर। now second things comes, that is regarding logistic regression. It's actually basic a concept of classification, but there's only a slight difference between these two things. Fine. So what does logistic, like linear regression actually works on numerical data, that is continuous data on a numerical data, while your logistic regression actually works on your categorical data. Fine. Like I'll just take a quick example, like A and B. These are okay. We have 2 data sets, like fine. And now like something like okay, fine. I'll just take it as a time here. Time and watch. Okay. Watch. Now again, I'll take it example as 1. Yes. 2, no. 3, yes. 4, no. 5, no. 6. Yes, 7, no. 8, no. So this is a small data set I have taken. Fine. What if the time 1, 2, 3, 4, 5, 6 and shows the time, and watch means yes, no. What is this simple data set? Is something like at what time, at that time, whether you have used your phone, used your mobile or not. Like at 1, yes, I have used the mobile. Like at 2, I have don't use that mobile. Similar fashion it moves on. Like now this watch is actually in a categorical form of data. So now can like linear regression is not going to work on here. So for that reason, to work on any categorical form of data, we are going to use logistic regression. Fine. So what does logistic regression actually works? It works on the function name, that is sigmoid. Its equation is in the form of 1 divided by 1 plus e raised to minus x. It's in the power form, like okay, like 1 divided by 1 plus e raised to minus x. So what does this x means? X will be your independent variable and y will be your dependent variable. So this is the okay, again. I'll just try to write the sigmoid function again. Y equal to 1 by 1 plus e raised to minus x. Okay, so this is actually sigmoid function. So what does actually sigmoid function does is that it just converts your categorical form of data or any data into the form of probabilities. Fine. That is, it lies actually sigmoid function is going to lie between 0 to 1. Fine. So what it just converts you in the form of probabilities. Fine. Whatever the data you have, it just convert into the form of probabilities by using this equation. Y equal to 1 upon 1 plus e raised to minus x. X will be your independent variable, y will be your dependent variable, and all the values will be will lie between 0 to 1 only. Fine.
Now next comes how actually it works on, how the graph looks like. Fine, this will be like graph, and what is actually does, it just form like a this sigmoid like function. This will be your 0, this will be around 0.5, and this will be your 1. This will be your x-axis, and this will be your y-axis. So this is something like this is your something, we can say it as an cutoff mark. Like it's not should be surely like a 0.5 only, you can change this, like your data points going to be like here or either here. Okay, what does it actually does? Now whatever the point data points you are getting after by using this sigmoid function, and after converting into the probabilities values, whatever the things that are lying before 0.5, they are going to be placed here in the class B, and the values which is higher than 0.5 will be in the form of class A. सिंपल, ठीक, सिंपल होता है कि ये जब कैटेगरिकल फॉर्म में डेटा हो तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सिग्मॉइड फंक्शन का यूज करते हैं। अब सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, सिंपली आपकी जो डेटा होती है ना उसको प्रोबेबिलिटीज के फॉर्म में रख देता है। अब किसको रख देता है, वाई एक्सिस को, क्यों, क्योंकि ये हमारा ये जो देखा ना आपने, ये वाई एक्सिस है, यानी ये सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स की जितने भी वैल्यूज होंगे उन सबको प्रोबेबिलिटीज में वो कन्वर्ट कर देगा। अब सिंपली क्या करेगा, कन्वर्ट कब करेगा, प्रोबेबिलिटीज। अब प्रोबेबिलिटी कब किसके किसने बीच में रहती है, 0 से 1 के बीच में। Fine, it lies from 0 to 1 only. Fine, so what does actually the graph show? Like the graph will actually form like an S type function, that is your sigmoid function. This will be your 0, this will be your 0.5, and this will be your 1. All the points which are going to be lie between these two, it should not be less than 0 and not be more than 1. So whatever the data points, जो भी points आपके 0.5 से कम होंगे वो particular A क्लास में आएंगे, और जो भी values जिसकी वैल्यू 0.5 से ज्यादा होगी वो A क्लास में आएंगे। सिंपली हमने क्लास में डिवाइड कर दिया, जो हमने देखा प्रीवियस एग्जांपल में, वी हैव सीन लाइक वी हैव एन एग्जांपल ऑफ यस नो यस नो यस नो। So after converting into sigmoid functionality, all the yes will be into an one function, one class, and all the no will be into an another class. Fine, that's actually works. Now what if it has exact value of 0.1, 0.5? So in linear like logistic regression, all those points will not going to be classified, they will remain as unclassified. But there are least chances, like there are very rare chances that we are going to get an output like 0.5 and all. Like if we have a data set of 100 data points, then among those 100 only 5 to 6 are going to light at 0.5, and all those things will be removed, like we can say they will remain as unclassified. Fine. Now like categorical has another different types of data, like you have yes no formation, true false, okay not okay, my dog cat, and all those classifications and all. Fine, so this is actually working of logistic regression. Is basic difference, like linear regression works on y equal to mx plus c, while logistic and yeah, linear regression actually works on numerical type of data and they have a continuous data. Similarly, logistic regression, this is basically uses the function as y equal to 1 upon 1 plus e raised to minus x. That is called as a sigmoid function, which converts your data into n probabilities that lies between 0 to 1. And it actually works on categorical form, that is your discrete values that will be like yes, no, true, false, like, and all those things. Fine. In linear regression, we form a straight line, while in this logistic regression we form an S type line. Fine. इस दोनों points में if anyone has any doubts? किसी को अगर डाउट इसमें? No sir. बाकी others? No, sir. Yeah, No doubt, sir. No, sir. Continue. Okay, fine. Simple, इतना हो गया. And now the last thing, that is your polynomial reduction. I'll just I'm giving you two examples here. Fine. This is one of your graph and this is second graph. Fine. You have some data points like this in this formation.
and you have data points like other graph has this type of formation. We have two graphs. One is something like it's showing a linear form of data, that it is continuous, while the other is showing a non-linear type of data. Fine. So now what, like in the first example, we can simply use a linear linear model. Fine, linear regression model we can find, and we can just simply do these things. We can simply categorize the data because all the data points lies in this particular range only. Now what if in this example, that is in the second example, what we have to do now, like if we are going to use this linear model, we are going to get only few data points. Even we can say, will we get or not, even we can't say, but only few data points we are going to get. So what about the data points that are not in this particular data? So now what does actually polynomial reduction is all about? Polynomial regression means simply to have like this type, when you have a structure of this type of data points, and you have to use like something like you have to use a linear model on some particular non-linear data. Simply you have to use a linear model on a particular non-linear data, but you have to keep in your mind that you should have the best accuracy. Fine, if we are going to use this now, we will get some accuracy, we are going to some get an accuracy, but those accuracy will be very less. Now what we have to do now, so we have to use the same linear model but with some additional points. Fine, I'll just write down the things here, like y equal to like we have seen, like a0 plus a1 x1 plus a2 x2, it will move on with a and xn. Fine, this is the actual equation of a multiple linear regression. Fine, now what we have to add in this so that it should convert into a form of polynomial regression? Simply we have to add now. That means what, whatever the things we have in multiple linear regression, just add any function, that is f of p. Fine, so what is this now, f of p function? F of p function is a function, polynomial function. So what does this polynomial function actually does? It just add additional values to a particular data set as per the required things, required like measurements or required things in your particular data set. Like for suppose we have two data set, like we have two independent variables x1 and x2 in a particular data set, but if we are not able to get like the particular accuracy or the particular points from this linear model, so what we are going to add, we are going to increase the degree of the particular very independent variables. Fine, like in this equation, okay, fine, like in this particular expression we are going to see some, like it says something regarding an parabola something. So we can have a parabola by using a 2-degree function as well. We can have those things. So how, for that what we have to do, simply just increase the variables like x1 with the degree of 2, same way like x2 increase the degree as well. Simply these are the things that are going to be add by its own. ठीक, ये सारी चीजें आप जो भी चीजें ऐड कर रहे हो ना, ये ऑटोमेटिकली पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेगा बेसिस ऑन योर रिक्वायरमेंट्स. अगर आपको, चलो इस एग्जांपल में इट्स जस्ट ओनली रिक्वायर्ड फॉर अ पैराबोला, सो यू कैन रिप्रेजेंट एनी पैराबोला as y equal to with an 2 degrees x square plus x square plus आ गया ये plus bx plus c. This is actually a 2-degree polynomial function.
while y equal to mx plus c is also a polynomial function with a degree 1, but this is having a degree of 2 here. So fine, if you want to have a degree of 2, you can easily find and go with the parabola functionality. ठीक, so if you want to go this, you have to just increase the degrees value. Simple, you can go with like x1 square and x2 square. Now if you want something more, if you want a cuboid functionality and all those things, go with x1 cube, then x2 cube. Simply you have to just increase the degree of the particular values. Fine. सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हमें पॉलिनोमियल रिग्रेशन में भी लीनियर मॉडल ही यूज करना होता है, लेकिन नॉन लीनियर डेटा पे। अब तक हमने जो भी लीनियर रिग्रेशन पे किया वो लीनियर मॉडल को यूज किया था लीनियर डेटा पे। अब हमें यूज करना है लीनियर डेटा को ही नॉन लीनियर डेटा पे कैसे उसको यूज किया जाए। तो नॉन लीनियर डेटा पे यूज करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज अ फंक्शन। व्हाट डज फंक्शन इज? दैट इज द फंक्शन कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है? सिंपली आपके पास जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उनके आपके पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनकी पर्टिकुलर डिग्रीज बढ़ाते जाना। जैसे हमारे पास x1 और x2 थे और अब हमें इन दोनों की डिग्रीज बढ़ानी है, तो सिंपल क्या करना है, x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर करना है। अगर हमारी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि क्यूबॉइड फंक्शंस की जरूरत हो तो x1 क्यूब x2 क्यूब। या अब आपको ऐसा नहीं करना कि x1 x2 आपके दो थे, अब जब आपने डिग्रीज बढ़ाई तो ऐसा नहीं कि वो x3 स्क्वायर x4 स्क्वायर हो। जो आपके पास वैल्यूज प्रेजेंट थे सिंपल और सिंपल उसी में ही आपको चेंजेस और डिग्रीज फॉर्मेशन करते जाने हैं। ठीक, इस इक्वेशन में जो था हमारी जो डेटा थी वो हाइपरबोला की सॉरी पैराबोला की फॉर्म में थी। एंड फॉर एनी पैराबोला 2 डिग्री फंक्शन इज इनफ। सो 2 डिग्री फंक्शन के लिए क्या करना था, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे जो कि थे हमारे x1 और x2, सिंपल हमने क्या किया, उनके डिग्रीज बढ़ा दिए x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर। ठीक, वही अब ये जो x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर होता है इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ये सारे के सारे आपके पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स पर यूज होती है। ठीक, इसमें कोई डाउट किसी को? नो डाउट सर। पक्का? ओके फाइन। सो विल सिंपली जस्ट 3 पॉइंट देखे थे, तीनों पॉइंट फिर से क्विकली देख लेते। लीनियर रिग्रेशन where we are going to have a linear model on linear data. Logistic regression, we have a linear model but on a categorical linear data. Polynomial regression, we have linear model on a non-linear data. Linear regression, we have 2 points, simple and multiple. Simple when we have one dependent and one independent. Multiple when we have one dependent and more than one independent. So logistic, again, it moves on with a categorical form of data on classification basis. Polynomial, you have to just increase the variables degree by using the polynomial function as per your requirements. If you want to have a cube, you can have with 3 degrees. If you want to have parabola, you can have with 2 degrees. तीनों के equations कैसे होते हैं? Like in linear, we have y equal to mx plus c. Like in in simple linear, we have y equal to a0 plus a1 plus x1, a1 x1, where a0 and a1 will be your coefficients of your regression model. In multiple, we have increase of independent variables. Again, like a0, a1, those coefficients are basically used to find which independent variable is going to more affect this dependent variable. And the third, that is your polynomial function, basically used to find out the different, like on non-linear data. If you want some parabola functionalities and all those things, we are going to use this polynomial function. Fine, बस इतनी चीजें थी, बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक, linear regression, okay, these are some just points only. Okay, fine. ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट अब जस्ट कि सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर से कुछ हिंदी में बताना हो या कुछ भी,
Again, I have to repeat something. Just write down in the chat box, so you can just directly will move on in the like practical purpose. Fast, quickly. सिर्फ chat box में लिख दीजिए. Yes, Ayushi ma'am. सर पॉलिनोमियल रिग्रेशन वो सुपरवाइज लर्निंग का ही हाँ पार्ट हाँ हाँ. होगा. ओके सर. Sir, is this all in graphs? Yeah, I'll show you within an example. I'll show you all those things. Okay. We'll go with the practical implementation now. Just quickly see that how actually codes and model works on. Then we'll see the visualization as well. Any more quickly write down if you have any doubts in the chat box. Quickly, fast. Nandini ma'am has written no doubts, sir. बाकी सबको डाउट्स है? नो डाउट्स. अरे 29 लोग हैं क्लास में. फास्ट, क्विकली. नो डाउट सर. ठीक. So we'll quickly see the example here. Simply what we have taken as simple, like this is an linear regression model for something. We have a salary data set I have taken. We have two things. One is your experience and one is your salary purpose. Fine. Simply we have taken these, simply we have written the data and simply converting the dependent and the independent variables with x and y, splitting the data in the form of with the test size and some random state. Then what we have done, just simply we have put that linear regression model. Fine. Simply we have taken this from regression, then linear regression model we have applied on where we have applied on both X train and on Y train data sets. Simply now this is the actual training personality. This is something like MTP that we have taken it as something like matplotlib name. Okay, now we have done an X train, Y train, we have color and those colors. This is actually showing you the salary versus experience. Fine. This is the age, years, and will be your years like of experience, and this is your salary. So the line shows your actual linear line, that is a linear model, and these blue dots are your data plots. Fine, simple. Second is, yes, if only the same thing, but it is actually in a testing data set. That is when you have test size of 0.3 ना, उसके हिसाब से ये हुआ. ठीक, लीनियर रिग्रेशन पता चल गया. सिंपल है, कुछ नहीं है. यहाँ पर आपने क्या, ये सिर्फ एक लीनियर लाइन ही यूज की है, एंड यू हैव सिंपली जस्ट प्लॉटेड द डेटा पॉइंट्स. फाइन. Yes, Hemant sir, are you able to see these graphs and you are able? This is not an important, this is just an example of testing data set. You can have this took on from this also. Fine. Yes, sir, I got it. This is a linear regression, right? Yeah, this is the linear regression. Okay, fine. Simple. So, just a minute. It's will logistic regression. Fine, just a minute. Okay, fine. So again, what we have done, this is something like we have taken the data set, imported the libraries, we have taken data set, converted X and Y into the formation of dependent and independent variables, simply splitting the data. As to convert the categorical data into the form of numerical data, we have to use the standard scaler that we have already seen in the futures cleaning, that is data pre-processing. Simply we have converted that standard scaler into that form. Then we have simply put the logistic regression model here. Then we have visualized the whole data into the training formation. Fine. We have just kept this max values and all. Simply, so this will be your graph. Fine. So the green points will show you as the 1. It's success, okay point, and these something like those red points are going to be shown in this format. Fine. So this is simply like I already said that logistic regression actually works on the class formation. So these are the two classes. One is for green class and another is for red class. It will show some red points. It is not going to have a full 100% accuracy, but most of the things will be sorted out. Fine. This is an age and salary function. This is only on a training set. Two classes we have formed, class A and class B. Some of the points will be in class B and some of the points are in class A.
सिंपल लीनियर मॉडल ही यूज होगा यहाँ पर भी, जैसे कहा था। सिंपल है कि बस आपकी क्लास फॉर्मेशन हो जाएगी, सिंपल क्लास फॉर्मेशन आर देयर, फाइन। Yes, sir. Yes, okay, so this is the basic difference. Linear function same, just to show the points, and logistic just created two classes, one is for class and another is for another class. Now the second point, third point, that is your polynomial function. Again, simply polynomial function, as already said, we are going to use the linear model. इतना पार्ट सबका वही रहेगा. Then we have just visualized this data. After this visualizing the data, we can see here, fine, this is the actual data now. Okay, we have formed this linear data, but these are the data plots we are getting now. Now how to calculate each and every data point, because at this data this line only 2 to 3 points are getting in this particular set. So what we have to do now, we have to just increase, we have to make a polynomial functionality. Simple, what we have done, we have just visualizing the polynomial regression here. Simply fine, we have implemented polynomial regression here, polynomial features. Simply then okay, fine, I'll just keep, yeah, this is the linear regression model and this is the polynomial regression model. Polynomial features, that's an actual function. Then we have kept with degree 2, as I already said, as per the requirements. If you form, like by seeing this thing, you can be able to see that it's enough to have a degree with 2 formation, fine. Then simply we had kept with the degree 2, we have X polyfunctionality, and then simply as we have visualized this linear regression model, in the same way we have visualized the polynomial regression model, fine. We have kept those things, max and minimum values, and now you can see now. Just you can get these values now. So you are getting a polynomial functionality, fine. यस, सम अदर लाइक, ये तो बहुत छोटा डेटा सेट था इसलिए आपको इतने पॉइंट्स मिल रहे हैं. कुछ ऐसे भी डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं कि जो आपके पॉलिनोमियल कवर ना कर पाए, बट सिंपल इसका मतलब यही होता है कि आप इससे है ना एक्यूरेसी अच्छी कर सकते हो. By simply you can see now, like if you find an accuracy of this graph and an accuracy of this graph, which will show you an best accuracy, fine. Definitely this is going to be showing you the best accuracy because it is covering most of the points, fine. So that's what polynomial function differs about. Okay. Sir, is it using of simple linear regression or multiple linear regression? सी आप सी ऐसा जरूरी नहीं होता है, वो तो आपकी जो डेटा सेट्स होती है ना. देखिए यहाँ पर तो लीनियर रेग्रेशन जो था ये किसके लिए था, अब मेरे को तो देखना पड़ेगा, एक मिनट. हाँ, मैं सिंपल प्रिंट करके बताता हूँ एक बार. ये शायद सैलरी और पोजीशन ही है ना, तो शायद सिंपल दो ही चीज का था, शायद सिंपल लीनियर रिग्रेशन का ही होगा. ठीक, ओके. सिंपल था, लेवल और लॉजिस्टिक सैलरी के बेस रिग्रेशन पर में ही भी किया हुआ. ठीक, ओके सर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी सर वो लीनियर रिग्रेशन को कॉल करना पड़ेगा वैसे, जैसे आपने पॉलिनोमियल रिग्रेशन को कॉल किया है यहाँ पर. नहीं नहीं, लीनियर रिग्रेशन पे तो लीनियर मॉडल यूज ही नहीं करना ना, हमें तो सिंपल क्या करना है, लॉजिस्टिक ही करना. लीनियर मॉडल का मतलब क्या होता है, सिंपल सिर्फ ये तो जैसे फॉर्मेशन तो वही करेगा. लॉजिस्टिक कैसे काम कैसे करता है, कैटेगरिकल वाइज, क्लास वाइज पे काम करता है. यहाँ पर आपने देखा होगा ना, एक लाइन तो फॉर्मेशन यहाँ पर भी होगी. जो रेड और यहाँ पर भी हो रहा है ना, यहाँ पर कोई अलग सा कुछ फंक्शनैलिटी नहीं शो हो रहा है. यहाँ पर भी एक लाइन ही फॉर्मेशन हो रही है, बट ये दो अलग क्लास में फॉर्मेशन होंगे. ठीक, तो यहाँ पर आपको कुछ लीनियर रेग्रेशन का मॉडल यूज नहीं करना है. पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल में हम लोगों को लीनियर मॉडल ही यूज करना होता है, बट हमारा डेटा जो होता है ना वो नॉन लीनियर होता है. ठीक, अब यही डेटा था, इस डेटा पर जब हमने ये नॉन लीनियर डेटा पे जब लीनियर मॉडल लगाया तो ये एक्यूरेसी आएगी. अगर वो उसी पॉलिनोमियल डेटा पर जब हम ये वही नॉन लीनियर डेटा पे जब पॉलिनोमियल फंक्शन लगाएंगे तो इस पर्टिकुलर एक्यूरेसी आएगी. अब आप सिंपल कर सकते हो ना, यहाँ से ज्यादा एक्यूरेसी आएगी कि इसमें ज्यादा एक्यूरेसी आएगी. पॉलिनोमियल वाला डेफिनेटली पॉलिनोमियल वाले में ज्यादा आएगी क्योंकि इसमें ज्यादा डेटा पॉइंट्स कवर हो रहे हैं. हो सकता है कि जब आपकी डेटा सेट ज्यादा हो ना, कुछ और पॉइंट्स कवर ना भी हो, बट जितना भी होगा लीनियर से ज्यादा ही होंगे पॉलिनोमियल में. ठीक, सर ये आप शेयर करोगे? Is there any chat difference in between these three algorithms or table like that? Like okay, like अच्छा
मैं समझा नहीं एक्चुअली मणिकंठा सर व्हाट यू आर सेइंग। या कौन पूछा मेरे को ये शेयर कर, मैंने ऑलरेडी कहा ना मैम कि मेरा अभी क्लासरूम में ना ठीक से बराबर चल ही नहीं रहा है मेरा, तो मैं ना शेयर करना चाहता हूँ बट शेयर उसमें हो नहीं रहा है। जैसे ही मेरा काम करना शुरू, क्योंकि मैं इतना अगर यहाँ पर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं शेयर करना चाहता हूँ, मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बट इट्स समथिंग मेरा क्लासरूम वर्क हो नहीं रहा है, तो मैं शेयर कर नहीं पा रहा हूँ। अगर मेरा अगले दोस्त में ये 2 दिन व्हाट्सएप देखूंगा। पे शेयर नहीं हो सकता? हाँ व्हाट्सएप पे ये चीजें शेयर करने के लिए मना किया हुआ है ना, क्लासरूम बनाई ही इसलिए कि उसमें शेयर ओके किया सर। जाए, है ना। तो मैं देखूंगा अगर 2-3 दिन में अगर चीजें शेयर नहीं होती है तो ऑलरेडी जो हमारी दिव्यांशी मैम है ना, उनको मैं सारे कंटेंट दे दूंगा, वो धीरे धीरे करके वो मैम आपको शेयर कर जाएगी, ठीक। आई एम रियली सॉरी, आपको दो यस तीन सर। दिन आपको वेट करना होगा, फिर आपको उसमें मैं शेयर कर दूंगा। सर मैं ओके सर, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ। इसलिए मैं आपको है ना टास्क में मैं आपको प्रोवाइड कर नहीं रहा, मतलब प्रोवाइड हो नहीं रहे मेरे से एक्चुअली, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। जैसे हो जाएगा ना मैं सिंपली कर दूंगा। आप डेटा प्री प्रोसेसिंग का इन सब का मैं नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है, उनका मैं नहीं दूंगा। बट या जैसे सिंपल जैसे ये 3 देखे ना हमने, पॉलिनोमियल, लॉजिस्टिक और लीनियर, सिंपल में यही 3 दूंगा, बट आपके सिर्फ डेटा सेट्स चेंज कर दूंगा बस, ठीक। तो आपको सिर्फ काम को ही करना होगा, आपको सिर्फ देखना होगा कि वर्किंग कैसे होता है करके, कोड कोड सब मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके सर, ओके सर। हाँ बट एक आज तो मंडे है, अब देखना होगा कि कब जैसे आता है, जैसे आएगा आई शेयर विथ यू दिस थिंग्स, ठीक। sir can I या यस यस मणिकंठा सर। sir what I mean is like just like a comparison between like so linear logistic and polynomial regression, so Like is there something like any table. part like that? See Table logistic, like logistic comparison. is like yeah, logistic regression is an example of classification, okay. It's not an example of actually regression analysis. It's something like to know that what actually the difference between linear regression is logistic regression. I have taken this example here, fine. So it's Yes sir, basically a fine. logistic regression is an example of that classification. Yes, I understand you are saying something like a difference between all those things, na. I'll see. I'll have to see. Like I have to search in Google like something. It's there is having a difference between linear and logistic. There will be a lot of difference. Linear and logistic regression difference. We'll see. Okay, this is showing. One is showing in Java T point. Simply okay. So this is the thing. Are you able to see? है ना? I already told you these things that. Is like this is going to be a something sigmoid functionality and this is to be a simple line functionality, and this is going to be like it works from 0 to 1, fine. This is clear from these 2 points. Then we'll have to see. Okay, fine. This is the okay, fine. Linear regression, please just see these things, okay. Is linear regression basically used to predict the continuous Yes sir, dependent. excellent, that's fine. Okay, it's easy visible ना? यस सर, विजिबल सर। ओके सो मैं सिर्फ बता रहा हूँ मैंने जो बोला इसमें है कि नहीं, सिंपल। लीनियर रिग्रेशन, कंटिन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल्स, लॉजिस्टिक बेस्ड ऑन कैटेगरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल, यूज फॉर regression problem, use for classification. As already showed that logistic is an example of classification. Again the continuous values are simply a numerical values, fine. Predict the values of categorical variables, that is yes, no and all those, fine. Linear regression, it works on line. Logistic regression works on S curve something, sigmoid functionality. Then these are some other examples, like there's an output for linear regression must be continuous, like these are the things, like then output of logistic regression like in the form of yes, no and all those things. In linear regression, it is required that the relation between a dependent variable must be in a linear form. Linear forms means मैं बताता हूँ कैसे। linear form का मतलब होता है जैसे जैसे आपकी linear form means like as the value of x increases, in the same way your value of y also increases. Dependent variable increases, independent variable increases. Logistic regression is not required to be in a form of linear relationship. Okay, so this is basically the linear regression. Basically, I think that I have covered this point. Only basic difference is just it works on some numerical data, it works of categorical data. It is a regression problem and it is a classification problem. Fine, that's the only major difference between those two things.
and now linear, and we are going to have polynomial regression in tabular form. अरे बाप रे, ये तो इनने एग्जांपल लिया हुआ है। See, this is the actual simple equation. Okay, okay, fine. This is a very good example. See, in this example, we have a linear model we have simply used, and we have such a data set. Okay, so here equation is something like y equal to alpha 0 plus like a0 plus a1x1 form. Is it clear, Manikanta sir? And now what in this formation? It is formation of a0, a1, x1, and we have just increased the value of the degree. Sorry, we have just increased the degree of x1. Fine. Manikanta sir, are you able to listen me? ऐसा लगता नहीं है यहाँ पर। ये क्या है? अरे बाप रे, इतना नहीं देखना। सिंपल। ओके, इस इक्वेशन से पता चल गया ना कि y इक्वल टू ये a0 a1 x के फॉर्म में है, एंड ये a0 a1 x1 एंड a2 x2। बस यहाँ पर हमने क्या कर दी है, डिग्री बढ़ा दी है। ठीक, अब इस सिंपल लाइक अगर b1 का जो x1 का जो भी कोएफिशिएंट होगा b1, सेम x1 स्क्वेयर का भी कोएफिशिएंट तो जो होगा ना वो भी सेम ही होगा। ठीक, ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए ले लिया है, बट उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक, सिंपल है, यहाँ पर x1 स्क्वेयर ले लिया हमने, सिर्फ डिग्री बढ़ा दी है। ठीक, दैट्स द ओनली, इट विल जस्ट ऐड लाइक इन द फॉर्मेशन। फाइन, यस और नो? पता चल गया ना सिंपल इनमें? यस सर। हाँ, तो बस, तो वो यही था। ठीक, अब ये तीन चीजें जो थी वो तो मैं आपको बाद में जैसे क्लासरूम ठीक हो जाएगा मैं शेयर कर दूंगा। ठीक, अब किसी को कुछ पूछना हो इन तीनों के रिगार्डिंग? यस, एनीवन? एनी क्वेरीज इन दिस? सिंपल लाइक हमने तीनों एग्जांपल भी देख लिया कि कैसे एक्चुअली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी कैसे होता है करके। लीनियर का जो फॉर्मेशन था वो, देन लॉजिस्टिक वर्क्स ऑन कैटेगरिकल, एंड फाइनल दैट इज पॉलिनोमियल वर्क्स ऑन अ डिग्री फंक्शन पॉलिनोमियल। फाइन, नाउ एनीवन मोर, एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन सर। अच्छा, ठीक, एंड या वन मोर थिंग लाइक yesterday I have shared with you a small Google form that is regarding cryptocurrency and all. Yes sir. Anyone has filled the form? Yes sir, filled. It's a request to all of you, okay? क्योंकि ये रिसर्च वर्क चल रहा है ना, तो I want reviews of at least 140-200 people. ठीक, I have already get 60-70 from different groups. It's a request to all of you that please share, just see the detail. I have already written the details there. Just go through it, just study it, and whatever, whether it's a positive or a negative, I don't mind, but just give a reply, please. Because I want the reviews, so I have to start research work on that. Please, it's a request to all of you. Sir, can you share the link again? Okay, fine. Then I'll share with you again the link. Okay, fine. If you don't have any queries, you can move on. See, आज तो तीन, see, like one more point, like just a minute, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या होते हैं करके। जैसे हमने रेग्रेशन में देखा ना, रेग्रेशन में और भी चीजें आती है। ठीक, अब रेग्रेशन में जैसे मैं बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, रेग्रेशन के अंदर है ना और भी चीजें आती है, जैसे हम कह सकते हैं उसको रिज रेग्रेशन, लेसो रेग्रेशन और इलास्टिक नेट रेग्रेशन। किसी को पता है इन तीनों का रेग्रेशन? सुना है कभी किसी ने? हाँ सर, तुहिन सुना सर, है आपने सर। सुना है? हाँ सर, सुना है सुना सर। हो? थोड़े हाँ, बहुत काम किया है ठीक। सर, बहुत ज्यादा काम नहीं है, बस बहुत कम हाँ, सी, काम किया है। it's for a basic purpose only. That's the reason why I have not taken these things, that what is
called as ridge regression, lasso regression, and elastic net regression. As we have already been like हम already late चल रहे हैं क्योंकि बीच में एक छुट्टी भी पड़ गई and all those things के कारण अगर time permit करता है we'll definitely look upon these things, what are these things and all. But apart from that, tomorrow similar way we are directly going to into the formation of classification. Basic आपको यही तीन याद रखनी है, linear regression and polynomial regression. Logistic हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत होती नहीं है. एंड उसके बाद जब आपका क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगा, क्लासिफिकेशन में हम और भी कुछ अलग अलग देखेंगे, ठीक. जैसे लॉजिस्टिक रेग्रेशन तो ऑलरेडी देख लिया है, सिग्मॉइड सर प्रॉपर्टी. एक्सजी बूस्ट रिग्रेशन भी तो सर होता है. कौन सा? एक्सजी बूस्ट तो होगा क्योंकि एक्चुअली मैंने इतना मुझे उस पर आइडिया नहीं होगा क्योंकि मैंने जिस पीपीटी से मतलब कि रेफरेंस तो मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जो पीपीटी मेरे पास थी उससे मैं कर रहा हूँ, तो जो मुझे पता था उसके बारे में मैंने इतना बोल दिया था. सेकेंड थिंग, हाँ हाँ, एंड क्लासिफिकेशन में हम कल शुरू कर देंगे, ठीक. अब तो उसमें तो और भी अलग अलग क्लासिफिकेशन आएंगे, जैसे कि होते हैं ना लॉजिस्टिक रेग्रेशन जो कि हमने आज देख लिया. कल होगा डिसीजन ट्रीज, फिर रैंडम फॉरेस्ट, नेव बायस एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक. वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिसीजन ट्रीज आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो शायद कल का पूरा लेक्चर भी शायद चला जाएगा डिसीजन सिर्फ और सिर्फ डिसीजन ट्री पे, ठीक. बट वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन ट्री, ठीक. फाइन. So it's a request to all of you to be present there because we are going to say decision tree tomorrow and a small intro to random forest. And then maybe on the next day we'll have a naive bias and support vector machines. Fine. So tomorrow, like already we have seen the logistic regression today. Tomorrow we are going to see decision trees. Fine. Yes sir. Okay. Okay. So yeah. So okay. Fine. So everyone else can remove. Okay, so yeah, okay, fine. So if you have any queries, you can be there. Otherwise, you can move on from the group now. Okay, तो sir, ही सर bye, सिर्फ sir. आप रुकेगा, बाकी सब चले जाइएगा. Okay sir. And Manikanda sir, if you have any doubts, you can also stay here. आकांक्षा मैम, किसी को कोई डाउट हो तो रहिएगा, बाकी सब निकल जाइएगा. No, sir. All clear. ओके आकांक्षा मैम. Hello, sir. Yes, Anudeep sir. What might be the accuracy of unsupervised learning, sir? Is it more than supervised ones? मतलब एक मिनट, हाँ, दिव्यांशी मैम आ गई. हाँ आ गई मैम. यस मैम, दिव्यांशी मैम, अगर आप रिकॉर्डिंग बंद करना तो कर सकते हो मैम. मैम आपके अभी लेक्चर्स चलते हैं अभी आपके? एक्चुअली मेरा कॉलेज का काम चलता है थोड़ा सा.